Hello children, how are you? Hope you all are doing fine. Children, in this video, I am going to start exercise 10.1 of the chapter 10 Exponents and Powers of class 8. Okay? So, in the first question, we have to evaluate. Okay? And the first question is 3 raised to power minus 2. Children, जब भी आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट द लॉ विच लॉ वी हैव अप्लाइड हियर. ओके, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 3 रेज टू पावर माइनस 2, सो हम यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? जब किसी बेस का पावर नेगेटिव में होता है, मतलब एक्सपोनेंट इज इन नेगेटिव, है ना, in order to make it positive हम क्या करते हैं, इसका reciprocal लेते हैं and it becomes, the power becomes positive. Okay, तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए 3 raised to power minus 2 जब आप लिखते हैं तो this is your base and this is your exponent यहाँ पे power. Okay, next जब base आपका यहाँ पे 3 है और इसका पावर नेगेटिव में होता है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये बेस का रेसिप्रोकल लेंगे. सो इट इज 3 एंड 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3 एंड नाउ दिस पावर बिकम्स पॉजिटिव. ओके, सो 1/3 रेज टू पावर 2. तो आप यहीं पे अपना सोल्यूशन स्टॉप कर सकते हैं या फिर आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. 1/3 रेज टू पावर 2 का मतलब है वी हैव टू मल्टीप्लाई 1/3 2 times. Okay, and so 1/3 multiplied 2 times is your 1/9. Children, the second part of the first question says that we have to evaluate minus 4 raised to power minus 2. Okay, so again हमको कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है, यूज करना है यहाँ पे, x to the power minus m will be equal to 1/x to the power m, positive m. Okay, अब यहाँ पे हमारा बेस क्या है, -4. जो बेस अगर नेगेटिव है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, इसका हमको साइन या इसको हमको उसका चेंज नहीं करना है. ओके, सो -4 विल बी एज इट इज -2. तो ये -2 पावर को माइनस से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-4 एंड रेज टू पावर 2. ओके चिल्ड्रन, नाउ -1/4, आप ये माइनस का साइन आप न्यूमरेटर में भी लगा सकते हैं, इसका मतलब भी सेम होता है. सो इट विल बी -1/4 मल्टीप्लाई ट्वाइस, 2 टाइम्स आप -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ माइनस 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 प्लस हो जाता है. ओके, सो 1 1s are 1 and the denominators are 4 and 4. So 4 multiplied by 4 is 16. So the result is 1/16. Okay, hello children, back to the video in a second, but before that I want to inform you all that I'm taking online classes also. So if you are really liking my videos and you are okay with the explanation, so you can join the Telegram group of mine. The link is given in the description. Thank you. Then the last part of the question says we have to evaluate 1/2 raised to power -5. Okay, again the power is -5, so we are going to use the law x raised to power -m, and to make it positive इसका reciprocal लेंगे and 1/x raised to power positive m. So children, 1/2 का reciprocal होगा 2/1. And this power negative -5 or the power negative power will become positive and this will become +5. Okay, so 2/1 का मतलब होता है 2. Okay, you can write 2/1 as 2 also, raised to power 5. So
2 को अब 5 times you have to multiply. So 2 into 2 into 2 into 2. Okay, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 2s are 32, and this is your result. Okay, children? Children, if you're fine with the explanation, okay, so don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe the channel.